में सबसे ज़्यादा दिक्कत होती है, गर्मी ज़्यादा रहती है। काम बहुत कम होता है इस इतनी गर्मी में। पंजाब में तो बहुत सारे फार्मरों ने मतलब शायद आपने सुना भी होगा सुसाइड तक कर लिया जी कुछ फार्मरों ने, क्योंकि उनके पास तो लास्ट में एक ही कमाई होती है। The productivity and success of the company really does rely on the well-being of the workforce. You work, you earn, and you eat. If you do not work, you won't eat. It's facing us in the eye. The students have to be made aware. They have to have an opinion now. Yes. We need to realize that by 2050, there's only a 50% probability that we are all going to survive. It's good that this time we will have a strong representation at COP. 25 people will be traveling from Terry. Terry's basically been assigned. So I'm Suruchi Bhadwal and I've been working with Terry for the last 22 years in the field of climate change. The difference between the heat wave of this year versus what we've been hearing over the last 2 decades, earlier it was just pocketed events in some part of the country or the other. But this year was unique because 2/3 of the country was under heat wave conditions with consistently higher temperatures than the normals of those regions for a greater number of days. मैं राजपाल सिंह, क्योंकि हमारा इस समय जो हमारा मेन बिजनेस है वो डेयरी फार्मिंग है। हमारे पास 270 के लगभग गाय हैं, क्योंकि सारा साल इनको जो नेचुरल खाना है वो फॉडर है जी। हम मेन फोकस हमारा फॉडर रहता है। इसमें मकई हो गया और सर्दियों में जाके अल्फाल्फा और राई ग्रास वगैरह की फसलें हम लगाते हैं। लोगों ने क्या किया, पुराने ट्रेडिशनल तरीके से भी मार्च में आके पानी लगाना बंद कर देते हैं, क्योंकि मौसम इतना अच्छा होता है। जब पानी लगाते हैं तो फसल कई बार गिर जाती है। मतलब 15 मार्च तो टेम्परेचर इतना ज़्यादा बढ़ गया तो उसकी जो फसल का पकने का टाइम, उसको जो एनवायरनमेंट से जो प्रॉपर मिलना चाहिए सब उनको नहीं मिला। जब उसके पास पूरी फसल नहीं आती तो अगला रेंट देने के लिए उनको पैसे नहीं होते, आड़ती उनको पैसा नहीं देता, मतलब उन्होंने फिर खेती करनी ही छोड़ दी है इस वजह से। लेकिन सरकार से तो कोई सपोर्ट नहीं है इस बारे के में, लोग फिक्रमंद हो चुके हैं कि एनवायरनमेंट के कारण ऐसा हो रहा है। We are a developing country, urbanizing at a very rapid pace. Most of the cities and the way they're growing in an unplanned way is leading to the urban heat island effect, where we are trapping hot air within certain areas. मीनाक्षी लाहौरी जून में करती थी 2 घर में काम करके थक जाती थी, घर जाने की हिम्मत नहीं होती थी, फिर कभी कभी रिक्शे से जाती थी। मैं बीमार पड़ी थी, हल्का फुल्का सा फीवर, बच्चे ज़्यादा पड़े थे उस टाइम पे मेरे। फिर उसको भी यही चीज़ें बताई थी, पानी की कमी गर्मी की वजह से, तो उसमें काफ़ी बेकार हालत हो गई थी। लाइट नहीं रहती हमारे इधर, लाइट नहीं रहती है तो पानी भी नहीं मिलता, ये चीज़ें बहुत ज़रूरी है। अब रात से नहीं आ रही है लाइट, कल 8-9 बजे से नहीं आ रही है, परेशानी होती है। बच्चों के लिए तो करना पड़ेगा, जहाँ पे लाइट हो पानी हो, बच्चों का घर है, लाइट भी ज़रूरी है, पानी से ही हर काम होता है। There might be a situation where there'll be a 3-degree rise in temperatures. Are you concerned? Yes, definitely. You know, I love wandering about in class and interacting with my students, but I found myself tiring so easily. I'm not necessarily an unhealthy person who would, faint due to other reasons. So it became clear to me that my exposure to that temperature was the trigger for, me fainting. We being the age we are, now we've gone through the times when there was hail, thunder, lightning, rain, temperature freezing or very, very hot, and we went to school. So for us to comprehend why school should shut down just because the temperature has touched 40 degrees. I am totally against this policy. The kids need to be resilient. I'm all for it.
I try to go to open marketplaces, but at the moment you can't really go to those places because it's so hot. ये डीप रियलाइजेशन कहीं ना कहीं स्ट्रीट वेंडर्स के या बाकी वर्कर्स के मन में है कि मौसम बदल रहा है, कि एक्सट्रीम हो गया है, एक्सट्रीम हीट, एक्सट्रीम कोल्ड, एक्सट्रीम रेन। दूसरा फैक्टर ये है कि अनप्रेडिक्टेबल हो गया है। जैसे हम ही अब हम यहाँ खड़े हैं गर्मी में, कभी कभी हमें भी चक्कर आने लगते हैं, कभी ऐसा लगता है जैसे कि गिर जाएंगे। अब ये है कि काम करने के लिए तो गर्मी और सर्दी का 2 पैसे कमाने के लिए काम तो करना पड़ता है, लेकिन हमारे काम में बहुत फर्क पड़ता है गर्मी में। हम ज़्यादा कमा नहीं सकते, मुसीबत भी बहुत पड़ती है, हमें राहत नहीं मिलती। 19 में एक स्कीम दिल्ली सरकार की थी, स्ट्रीट वेंडर्स स्कीम 2019, दैट बेसिकली डू नॉट अलाउ देम टू यूज एनी स्ट्रक्चर. These blue seats are not allowed because they are fixed. You need shade. Not only protects the vendor, this also provides shade to consumers. And problem is that we do not have enough greeneries also. सरकार हमारे बारे में कुछ नहीं सोचती। अब इतना मेहनत करने के बावजूद भी अब हम यहाँ आके स्टॉल अपने सजा देंगे, दुकानदारी कर रहे हैं, वेट करते हैं कस्टमरों का। इसके बाद भी हमें डर रहता है, MCD वाले आ जाते हैं, सामान ले जाते उठा के हमारा। हम यही चाहते हैं कि सरकार हमारे बारे में कुछ सोचे, हमारे भी कुछ सोचे कि जी हम अच्छे से बैठ सकें, अच्छे से रोटी कमा खा सकें, रोजी रोटी चल सके, बच्चों को पाल सकते हैं। गलत काम नहीं कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं। मेहनत करने वालों को अगर ये हक नहीं मिलेगा तो बेकार है, क्या करेंगे ऐसे जीवन से। Productivity is basically going down and it's affecting the economy and our incomes and the well-to-doness of our people. Who's accountable? Where is the accountability in the system? My name is Anant Ahuja. I work at Shahi Exports and I had the organizational development team which is responsible for programs on worker well-being, environmental sustainability, compliance, among a few other areas. We run over 50 factories across 9 states in India, and these employ over 100,000 full-time workers. The productivity and success of the company really does rely on the well-being of the workforce. ನನಗೆ ಬೇಸಿಕ್ಲಿ ಮೈಸೂರು ಅಲ್ಲಿ ಜರ್ನಿ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ನನಗೆ ತುಂಬ ಟ್ರಬಲ್ ಆಗ್ತಿತ್ತು. ಸೊ ನನಗೆ ಅಲ್ಲೇನು ಬೆಳಗ್ಗೆಯಿಂದ ಸಂಜೆವರೆಗೂ ಫೀಲ್ಡ್ ವರ್ಕ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ನಾನು ಬಿಸಿಲಲ್ಲೇ ಸುತ್ತಾ ಇರ್ತಿದ್ದೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ನನಗೆ ಹೆಲ್ತ್ ಇಶ್ಯೂಸ್ ಅಂತಂದರೆ ಗ್ಯಾಸ್ಟ್ರಿಕ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ಎಲ್ಲ ಅವು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಯಿತು. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಹಾಗಿಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಿ ಬಿಸಿಲಿನ ನಮಗೆ ಒಳಗಡೆ ಸಿಗೋದೇ ಇಲ್ಲ, ಯಾಕೆಂದರೆ ನಾವು ಫುಲ್ಲು ಅಂಡರ್ ಕೋಲ್ಡಲ್ಲೇ ಇರ್ತೀವಿ, ನಾವಿಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೆ ಗಾಳಿಲೇ ಇರ್ತೀವಿ. ಸೊ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಮಗೆ ಟೈಮ್ ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ, ನನಗೆ ದಿನಗಳು ಹೋಗೋದು ಗೊತ್ತಾಗಲಿಲ್ಲ. ಸೊ ನನಗೆ ಹೆಲ್ತ್ ಇಂಪ್ರೂವ್ ಆಗೋಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಯಿತು. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ನನಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಚೇಂಜಸ್ ಏನು ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಯಿತು. We've taken a range of different measures to address the challenges caused by heat stress. We have high volume, low speed fans, which essentially push down cool air. We've installed LED lights at the needle point. When Shahi converted to LED lights a few years ago, the temperature on the shop floor reduced by 2.4 degrees Celsius. So through all these different measures, there's ways we can actually make sure it's cooler inside than outside by a few degrees. NREGA is an extraordinary program because it guarantees employment in a country the size of India, providing basic infrastructure in a village. So all the things that could sustain a rural community. NREGA gives you a choice to go to work at any time of the year, but what is the lean time of year for work is the heat season. So you have the highest number of people turning up for work at the hottest time of the year. Is unbearable. It's impossible almost to hold your instruments.
and often the government does actually reduce the work norms during those months, and it does change timings. So they're not looking at it from the point of view of workers. They're not giving that self-management the opportunity that it should have. They all made a very strong demand that let us determine our working hours. I think actually if we were to pay more attention to the people most affected, which is the poor, who are workers, who are farmers, who produce everything that we have today, I think we will perhaps find better solutions for all of us as an economy and for the globe, certainly. जिस तरह साढ़े बंदे लेबर वाले काम करते हैं तो मतलब 40 डिग्री तक होंदा तो वो चीज़ ਨੂੰ ਝੇਲ ਲੈਂਦੇ ਆ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਹੱਦ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਟੱਪ ਜਾਂਦੀ ਆ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਕੰਮ ਛੱਡ ਕੇ बैठ ਜਾਂਦੇ आ। हर साल से इस बार जो है ना काफ़ी गर्मी है, इस बार बारिश नहीं हुआ एक बार। 11:30 से लेकर के 3 बजे तक पूरा गर्मी है, मजबूरन काम करना पड़ता है ना। काम करके जाते हैं तो थका हुआ रहते हैं तो वैसे ही नींद लग जाता है हम लोगों को। पंजाब में तो बहुत सारे फार्मरों ने मतलब शायद आपने सुना भी होगा सुसाइड तक कर लिया जी कुछ फार्मरों ने, क्योंकि उनके पास तो लास्ट में एक ही कमाई होती है। मतलब एक साल तो कहीं ना कहीं कवर कर लेगा, किसी से पकड़ लिया, किसी रिश्तेदार से पैसे लिए, ये कंटिन्यूसली चलता रहा एक आटा मतलब 1-2 फसल मतलब और चावल की फसल भी होगी, उसके आने वाली गेहूं की फसल बारे तो मतलब एक काम को छोड़ देंगे। मतलब इंडिया के लिए मतलब सभी लोगों के पेट भरने के लिए बाहर से अनाज मंगाना पड़ेगा। There have been cases of deaths that have been reported with regard to heat strokes, dehydration, cardiac arrests and respiratory problems, and most of these people who are basically working outdoors. जब ऐसी कंडीशन हो, एक एब्जेक्ट पॉवर्टी की कंडीशन हो और सरकार की जो सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स हैं वो वहाँ पर लागू नहीं हो रही हैं, वो भी कहती हैं आप ये काम इतना मेहनत का काम है, अब ये काम मत करो, तो इसके अलावा हम कर भी क्या सकते हैं। बचपन से ये काम सीखा है हमने। We do have cases where people have succumbed to that actually in Delhi itself, heat wave के दौरान। एक अवेयरनेस का भी कमी है। कभी कभी ऐसी स्थिति आ जाती है हम लोगों के सामने, हमारा पड़ोसी अगर कोई बीमार पड़ गया, इसी हालत में चक्कर खा के गिर गया, तो हमें इसको उठा के ले जाना पड़ता है हॉस्पिटल। एक दूसरे की हम हेल्प करते हैं, हम ही लोग एक दूसरे की हेल्प करते हैं, बाकी हमारी हेल्प के लिए कोई नहीं आता। People are not aware about dehydration, rehydration, तो बेसिक डूज और डोंट्स उसका भी अभाव है, तो काफ़ी कुछ करना होगा और शुरुआत करनी होगी, अभी शुरुआत भी नहीं हुई है। जो ज़्यादा दूध देती है ये ठंडे मुल्कों की ब्रीड है, जैसे हॉल्स्टीन ब्रीड हॉलैंड की ब्रीड है और जर्सी कनाडा और यूएसए की ब्रीड है। मतलब ये जब गर्मी ज़्यादा होती है तो हमारे तो बहुत सारी समस्या शुरू हो जाती है, इनकी डेथ रेट भी बढ़ जाता है इन दिनों में आके। टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है तो हमें 24 आवर उसके लिए शावर और फैन जो मतलब लगाने पड़ते हैं, हमें चलते हैं, पीछे से लाइट नहीं आती, जनरेटर चलाने पड़ते हैं, मतलब 10-10 लीटर पर आवर हम जनरेटर यूज करते हैं इसके लिए। तो हम एक महीने में 20 लीटर डीजल लेके आते थे, लेकिन आज हम 1000 लीटर डीजल हमारे फार्म में एक महीने में यूज हो जाता है। वो सारा मतलब फसलों के लिए, डेयरी के लिए यूज होता है जी। तो वो हम गाय को खिला नहीं सकते हैं, गाय को नहीं खिला सकते तो लोगों की जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ती है तो लोग को गाय को छोड़ देते हैं, भी हमें काम ही नहीं करना। हम फार्मर काम नहीं करेगा तो दूध कहाँ से आएगा जी। मतलब हमको पूरा पता है मतलब गवर्नमेंट के पास इसका प्रॉपर डाटा नहीं है, आने वाले दिनों में मतलब दूध की बहुत सारी कमी आएगी इंडिया में जी, गर्मी के कारण से। We actually have 70% of our electricity requirement coming from renewable sources. Climate change is definitely a factor in our decision-making process. There needs to be more urgency around this. There also needs to be more research and understanding around how businesses can adapt to these changing conditions. You know, once they have a better understanding, I believe that can drive action.
the emissions out there and the concentrations out there are because of the developed countries. And therefore, the negotiations basically on how the developing countries can get assistance from the developed countries with regard to climate finance and appropriate technology to be able to adapt to the consequences of the changing climate. I mean, it's there, it's facing us in the eye. These are real issues. I mean, workers have to survive. They are most vulnerable. So they have a critique. They had a critique far before we did. We have only come to that critique because suddenly we find that the entire earth that we are living on is under threat. We are arrogant of our development, of our science, of our discoveries and innovations. Ultimately, this is going to hit back. 2/3 of your country is in floods every year, and therefore we all need to do something about it. हाँ, मतलब इसको मतलब पूरे साझे तौर पे सभी लोगों को इसमें शामिल होना पड़ेगा जी, फिर ही कुछ होएगा, क्योंकि मैं अकेला इसमें कोई नहीं कुछ भी नहीं कर सकता, नहीं तो फिर फ्यूचर में भुखमरी वाली हालत का सामना करने के लिए तैयार रहना चाहिए हमें. Students have to be made aware, they have to have an opinion now. At the end of the day, we are the ones who have to face the brunt of it. I should be the one taking the steps to stop climate change rather than depending on some old politician who probably won't be there in 2050 as well. They are not precious dolls. They better learn what reality is. Yes. COP26. Many countries came together and gave really motivational speeches that we'll be we claim to have net zero emissions by 2050, 2060, 2070, etc. Why are these goals such long-term goals? The world leaders of today will not take any responsibility for what happens in 2050 or 2060. We should have a COP conference in millions of places around the earth, not amongst the policymakers, but amongst the people most affected. The bills are being paid by us, the costs are on us, and the bureaucrats and the decision makers are still not accountable to the overall issue that we're talking about. Thank you all so very much. You need countries and bureaucrats and policymakers to come forward, and regulation and litigation. There is no second earth on which we can basically, migrate. You get your act together or be ready for mass extinctions. If we continue the same way and the patterns, I think it's a question of survival for the human race as well.